अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, उमर खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप कैसे हैं सर? माय वॉइस इज माशाल्लाह। ऑल क्लियर? या यू आर क्लियरली ऑडिबल। चलो ठीक है, कैमरा इज परफेक्टली फाइन। या लेट्स वेट फॉर। चलो बेस्ट। हाँ। नो वरी सर। या डूइंग योर प्रिपरेशंस। रोज़ा अभी मेरे ख्याल से टाइम है। जी जी जी। इट्स लाइक सो 4 p.m. राइट नाउ आई एम जस्ट मोर फोकसिंग टुवर्ड्स माय इंटरव्यू और हाँ आता and actually I'm planning for Hajj and will be going next माशाल्लाह। month for Hajj, inshallah. ग्रेट, माशाल्लाह So माशाल्लाह। I have a very short time to give my IELTS test before the Hajj. फिर अगर इंशाल्लाह सिलेक्शन होती है, बल्कि हो इंशाल्लाह जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो मेरे पास इंशाल्लाह। पे बहुत कम टाइम होगा टू गिव। या तो सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही आइलेट्स दे दें। दैट विल बी गुड फॉर यू। यस सो तो आपका इंशाल्लाह मैं इजी कल रहेगा। इंशाल्लाह आई विल बी स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन। ग्रेट ग्रेट या ग्रेट। लेट मी आस्क योर हाँ। he has joined us. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरहम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रज़ाक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट गिव मी अ सेकंड में। ये ये जितनी भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं छोटा हूँ, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं अस्सलाम ऑनलाइन वालेकुम। रिक्रूटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम साहब। वालेकुम। डॉक्टर अरहम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। वी हैव ओनली 40 minutes and we have already gone through वालेकुम 5 सलाम minutes. डॉक्टर साहब, कैसे? ठीक Yeah. है। Let's अल्हम्दुलिल्लाह। start. Thank you so much, Aram, for your valuable time. Myself, Dr. Abdurazak. I'm current Chevening scholar and pursuing MSc in Public and Environmental Health Sciences. Today we have Arham. Over to Arham. अस्सलाम वालेकुम जी। First of all, congratulations, Umar Saab, वालेकुम सलाम। on getting to this page. My name is Arham Rahim, and I am studying Masters in Public Health at University of Manchester. Um, So, starting with the first question, can you kindly just briefly introduce yourself and just give me a bit of context, like what exactly motivated you to pursue for the Chevening scholarship? Okay, actually, this is Umar Khan Utmazi from a very rural part of the Khyber Pakhtunkhwa, Charsadda. By profession, I'm an advocate, high court. By passion, I'm a community worker or social worker. I have just graduated from and just done my LLB from University of Peshawar back in 2021, and then onward, I have pursued my career as an advocate, district courts, and later in 2024 June, I have achieved milestone by getting the high court license. Along with that, I'm engaged in the community work, uplifting for the society, working for the voiceless in the community. Currently, I'm leading an organization, a registered organization with the name Citizen Rights and Advocacy Forum Craft. I'm the founder of the organization, and now from June 2024 till February, I have worked as a president. But now to give opportunity to the young people, I have stepped down as a president and now working as a patron chief of the organization. Along with that, I am working in the Human Rights Committee of the Peshawar High Court Bar Association, which is basically working for the promotion of the human rights and also working
to handle the cases related to the human rights violation. Along with that, I'm working with a women-led organization, the Hawadur organization, which is basically working for the women rights, transgender rights, and girls' education. So I'm working with them as a pro bono lawyer since May 2022. And I'm also the part of their legal aid committee, which is working for the advocacy and policy recommendation regarding to the human rights violation in Khyber Pakhtunkhwa. That's really inspiring, Homer. I just want to ask, you mentioned in your essays that you raised over 50 million PKR through the Helping Orphans and Widows initiative. I just want to know what exactly was your role and how exactly did you lead the whole effort and what were the means for collecting those funds? Okay, so actually, that happened after a reason to me. In the last 2 decades, Pakistan has been badly affected by the terrorism, and that too has affected the finances of the individuals. I'm also one of the affectee of the terrorism in the region that has badly affected my family finances as well. So in 2014, after getting 90% of the marks in the matric, still I didn't make into the Islamia College, which is basically a very great college and a dream college for thousands of the students after the matriculation. But due to the financial condition at the family, I didn't make it to the Islamic College. And I still remember the day how sad I was. But still, I got an opportunity to study on scholarship in a local college instead of going to the Islamic College. So when I went to the university later, one day on 17th Ramzan of 2017, I was sitting at night 1 p.m., 1 a.m., and I was thinking of how can I give something to my society, because I was thinking of those students who can make it to the Islamic College by marks, by academics, but cannot make it to due to the a financial condition. So one day later, sit with some students, with some friends, and we thought that we should start an organization with the name Helping Orphans and Widows. And that was the time for the first time, we raised 6,170 Pakistani rupees by giving a food package to a widow. And later on, Alhamdulillah, we started working what we were working in the community through food, through education. We were posting it on social media, and that has increased our trust among the people across Pakistan and within the region. So by that, we have raised 50 million rupees till 2025. The recent floods we have worked, and also in the Ramadan. So we have worked in the sector of education. We have supported more than 60 students in the university and college level, and that too on the Islamic College, which haven't studied, but we have supported 10 students to specific that college. We have started small scale businesses for the widows, like we have started cosmetic business within the home, class business. This is a business with a home for a widow. And along with that, we have also started some small scale business on tricycle for the people with special abilities. Along with that, we have supported more than 1,000 students with regards to the uniform, with the shoes and stationery. Yeah. That's really impressive. Would you mind mentioning some specific situation, some specific challenging situation that you faced during the creation of this initiative or during any project that you led yourself or any project that you managed? I just want to know about some challenging situation that you faced and how exactly you managed it. Okay, so the challenge I mentioned that was the terrorism in the region that has taken more than 80,000 lives in the Pakistan, and Pakistan has financially lost more than 120 billion dollars in this. But when you know that when there is no peace in the society, the economy also collapse, and the people, the general lives of the people also go down. So that was one of the reason that has affected me. And also when I was a student of the first year, and a terrorist attack happens in Peshawar in a APS school, and it has taken 150 lives, including 132 children. And that was at the time and after that I gathered, we set some friends together, and we organized a protest against that terrorist attack, and we led that
protest in the city centers, and we have gathered more than 200 people in the city center, and that too when you are 15-year-old. So terrorism was the first thing that has raised my concern towards the community work and to work for the people. Okay. I was reading in your essays, you wrote that you made some connections through social media and you have got lots of followers. So how exactly you're utilizing those followers? Can you give some example? Okay, so actually, currently in my professional role, being after enrolling as an advocate, I'm dealing with cases to human rights, domestic violence, transgender violence, so all dealing that. So I spoke on those issues through videos, through social media posts, and I post those things regarding the because in Pakistan, some of the society organization do not work directly. So when you speak on social media, in Pakistan is a country where 54% of the population is on internet. Around 116 million people are in internet. Almost all the government stakeholder on internet. So when you speak on internet, when you highlight an issue, they pick those issue rather than directly contacting them. So when there is any issue related to the society, to the people, human rights violation relating to the transgender, I spoke on those on my Facebook, on my LinkedIn, on my TikTok. I post those issues, trying to hide the privacy of the individuals, and then sometimes the government officials, the state or agencies contacted me individually, and those issues are resolved through those things. Makes sense. You mentioned about your citizen rights and advocacy forum. So, what is the exact model of this citizen rights and advocacy forum? Do you have some professionals working in it, or is it working on the volunteer model? How exactly are you running it? And also, do you see this initiative sustainable? Okay, so right now this is completely voluntarily process, because and that's too we are trying to engage young people, because if you want to bring change into the society, you have to reach into the grassroots level. Beyond reaching the grassroots level, you cannot bring those issues, and that is why we have tried to make two bodies in the organization. One is the executive body and one is the advisory body. So in the executive body, we have tried to bring students and the young graduates. But in the advisory council, we have brought together some from the academia, from the social sector, from the business community. So we have brought together the people, and in the future, because right now we are registered with the Khyber Pakhtunkhwa government, and now we are working on the bank accounts, and we are trying to register it with the Khyber Pakhtunkhwa Charity Commission, because without registration with the Khyber Pakhtunkhwa Charity Commission, you cannot open your bank account, and if you do not have a bank account, you cannot take funds. So at the moment we are trying to register and complete the registration process and all the legal necessities of the organization to get registered. And when you are registered with the Khyber Pakhtunkhwa, you have bank account, you can apply to grants, you can apply to funds, and you can more effectively in the community. So, Mr. Khan, you mentioned that most of the members of your society are working on the volunteer basis. By the way, last question from my side. I just want to know how exactly, since most of the people in your organization must be from different backgrounds and must be having different perspectives. So, what exactly are you doing to keep them motivated and keep them focused to achieve a common goal? So literally, today where I'm in, I'm just because of the volunteerism in the society. So giving the people, the young generation, a motive that yet too, when you are young, when you are volunteer, you can work and you can achieve. Today, the achievement I have achieved is mostly not just because of my academics, but due to the community work and the work we have done in the community that has given me the opportunity of achieving. Along with that, I have myself has traveled to more than 10 countries just because of the volunteerism, just because of the community work. So by those example,
providing them the opportunity of trainings, connected them to the government officials, to the other stakeholders, making them connection for them. This is not just an opportunity to work as a volunteer, but also to grow in the professional mood. Thank you so much. That's it from my side. Over to Razak Saab. Thank you so much, Dr. Raham. Umar Khan Saab, I have few questions from you. My first question will be why you have selected the University of Birmingham rather than other universities like University of Bristol or Queen Mary University for achieving your policy goals in Pakistan. Okay, so let me mention it that Queen Mary University of London is my third choice, and University of Birmingham is my first choice. So choosing Birmingham University, it has multiple perspective. One is academic, and one is the co-curricular part of the university. So in the academic side, as per my, I has gone through the university website and the research for that. So it's 10 among the top 10, top 100 best or recognized global law schools, and within the UK, it's 10 among the 25. Also the academia, the modules I have searched so far, like the module of the law, society, and governance, along with that dissertation on the legal topic, along with that international human rights law, cyber law, and international criminal justice system. So all these were the reason that I have chosen for the university. Along with that, the university faculty has a great number of people in their faculty, like Dr. Shahabuddin, Dr. Shahab Saqib, Dr. Vavrik bin Vavrik. So all these faculty members have done some great work in international human rights law. Along with that, in the research, and their publication have motivated me to apply to this program. One is the important part, that is the co-curricular part. The Center for at the Birmingham Law School, the Center for the Employability, Legal Research, Professional Legal Education and Research has more attracted me to this university, because it has certain components. I will mention quickly the advocacy component of this university. So being a practitioner in the Peshawar, working in Peshawar, this advocacy skill portion of the Center of the Employability, Legal Research, Professional Legal Education and Research well equip my advocacy skill, because this university provides an opportunity is of moot courts competition, bringing different advocates working in the UK system, so they can help me in equipping my advocacy skill. Along with that, pro bono portion of the center is also very important, because our organization is currently working on expanding pro bono services, because we have a very vulnerable group of the people in the community that needs legal assistance, and that too free of cost. So at the Birmingham Law Schools, we have a flag group, which is free legal advice group with the name of flag. Along with that, street law is a component of the center that provide and organize different awareness programs in the society. So I believe along with that, the research center at the institute will equip my knowledge to better understand laws, statutes, and case laws, and that will also help us to establish our first center for legal research and policy development in the region in future, inshallah. Great. Continuing your last part, you plan to establish a center for the legal research and policy development. What funding model and governance structure will make it sustainable? So as I mentioned earlier, that currently we are working to get registered with the Khyber Pakhtunkhwa Charity Commission, and that will open us the opportunity to open our bank account. So hopefully that till my graduation from the Birmingham Law School, coming back to Pakistan, we will have concluded that registration part, and we will have a bank account. So this will be the first center in this
in this region, because we still have no Center for Legal Research and Policy Development, and we will be applying to different grants, to fundings. Even we can work with the bar associations, with the Khyber Pakhtunkhwa Bar Council, and with different stakeholders in joint initiative. We can go with the Center for Legal Research and Policy Development through different stakeholders initiatives. Great. My last question will be, I'm very much curious, like Pakistan has already existing constitutional protection under the Article 8 to Article 28 of the Constitution. What additional value will your LLM in human rights law provide beyond the existing legal framework? Okay, so yes, of course, we have Chapter 2 of the Pakistan Constitution 1970 specifically talk about the fundamental rights. But actually, Pakistan today stands 129 out of 142 in the World Justice Project under the Rule of Law Index. And that is, Pakistan is 129 out of 142. Along with that, we are standing fifth out of six in the South Asia in the index. So this shows the number of the Pakistan position, that how human rights violations are happening. The issue is not that we do not have protections. The issue is the implementation, and that how can we sensitize the people to know about their rights. How can they ask for their rights? Because in the books we all have a lot of laws, but we have to give awareness to the people, and we have to work on the policy, and we have to work it on the system, that how can we bring this human rights into the curriculum. How can we sensitize the people, the general people who are not educated? Because Pakistan is a country where the illiteracy rate is already very high. So how can you make a layman that what is your right? What is right to life? What is right to movement? What is right to speaking? What is right to association? So for this, you have to work with the people, within the people, and for the people. Great. The continuation of this question, you have already mentioned that law exists, but there is the issue in implementation. What institutional barrier do you think exists in Pakistan for the implementation? So the institutional accountability is the very important part, because I myself, from the last 2 years, dealing as cases related to the illegal detention, custodial torture, gender-based violence, violence against the transgender. So we have seen that sometimes states actors are involved, but those people have not been made accountable before the law. So I believe that non-implementation of law is just because of the weak institutional accountability. So if there is a great mechanism and an effective mechanism for the institutional accountability, we can see Pakistan upholding the rights of the people. Great. Thank you so much. Over to Aram for the feedback on his part. You are mute, Arham. Still mute, Arham. ओके, Yeah. अब आ रही है आवाज? Yeah. ठीक है, उर्दू में दे सकते हैं फीडबैक? जी उर्दू में दे जी दो। जी 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 अच्छा, बहुत बहुत कॉन्क्रीट एग्जांपल्स थी आपकी, और बड़ा कॉन्फिडेंटली आप बोले हैं, और आपके सारे एक्सपीरियंसेस भी माशाल्लाह मैं पर्सनल लेवल पे बड़ा इन्फ्लुएंस फील कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। माशाल्लाह ऐसे ही जारी रखें सारे काम को। रिगार्डिंग योर इंटरव्यू, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कुछ गलत किया, लेकिन बस एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कोई भी आप एग्जाम्पल दें, तो उसमें ना थोड़ा सा इस तरह से एग्जाम्पल देनी चाहिए कि थोड़े से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हों। जब भी कोई एग्जाम्पल दें तो हमेशा स्टार्ट करें उसका कि वो आइडिया एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, और फिर आपका पर्सनल रोल क्या था। मुझे कुछ जगहों पे ऐसे लगा कि आप अपनी टीम का उमर खान, मेन मैं मकसद बता। आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, आप सुने। ठीक है। हाँ। अच्छा जी। मुझे ऐसा लगा कि आप अपनी टीम का एज अ होल गोल बता रहे थे कि हम ये अचीव करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, तो रादर देन
टीम का बताने से पहले वो भी बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेन अपना मोटिव ना बताएं टीम का, लेकिन टीम से ज्यादा अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उस टीम के अंदर बतानी चाहिए। इसका वो बेसिक रूल होता है कि रादर देन वी, यू शुड बी फोकसिंग ऑन आई, कि मैंने क्या किया है और मेरा पर्टिकुलर क्या रोल था। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो टू बी ऑनेस्ट वो आपको वहां पे टोक के पूछेंगे इस बात का कि आपका इसके अंदर क्या पर्टिकुलर रोल था। उसके अलावा ये है कि आपकी जो भी आप इनिशिएटिव बता रहे हैं उसकी ट्राई करें कि क्वांटिफिकेशन उसकी बताएं, डायनेमिक्स की, कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, लोगों को किस तरह आप एंगेज रख रहे हैं, और फिर एज अ होल उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है। तो जो भी आप एग्जांपल दें उसके अगर आप ये कंपोनेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे तो टू बी ऑनेस्ट वो इसी से ही क्वेश्चन निकालेंगे। तो बेहतर ये है कि टाइम सेव करने के लिए आप इन सारे एलिमेंट्स को अपनी हर एग्जांपल में इंक्लूड करें। मैं दोबारा से अगर समराइज करूं कि हाउ द आइडिया स्टार्टेड, इनिशियली आपने प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से आपने वो स्टार्ट किया। दूसरा ये कि आपका पर्सनल रोल उसके अंदर क्या था। तीसरा ये कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और उस पूरी चीज की फाउंडेशन के ऊपर आप एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, करना चाहते हैं समथिंग एल्स, क्रिएट क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन आपने फोकस इस पे रखना है कि ऑलरेडी आपने जो प्रेजेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिफिकेशन उसी चीज की होगी ना जो ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा मैंने आई और वही वाली बात कर दी। यस, इसके अलावा एक चीज ये थी कि जब भी आप अपने फ्यूचर प्लान्स का बताएं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट बेहतर थोड़ा सा ये लगता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को सेपरेट करके बताएं। उससे ये है कि आप क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मैंने इस तरह से नहीं बताया था कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को मैं अलग अलग बताऊं, बट उन्होंने मुझे टॉक के बीच में कहा कि अगर आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दें और शॉर्ट टर्म हमें अलग बता दें, मीडियम टर्म अलग बता दें, लॉन्ग टर्म अलग बता दें। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ही मुझे बताया कि शॉर्ट टर्म का मतलब ये है, कि टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है। तो जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि 2 साल के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, मीडियम टर्म मतलब ये है कि आप 5 साल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ये है कि आप 10 साल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। और आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि आप पास्ट के अंदर ये पर्टिकुलर काम कर रहे थे, प्रेजेंट के अंदर आप ये कर रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर बेस्ड ऑन योर पास्ट एंड प्रेजेंट आप अगले 2 सालों में ये अचीव करना चाह रहे हैं, 5 सालों में आप अपने आप को यहाँ देखते हैं, और लॉन्ग टर्म 10 सालों में आप अपने आप को यहाँ पे देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बस जाते ही आप अपना ये बताना शुरू कर दें। जब इस किस्म का कुछ क्वेश्चन आए तो ट्राई करें कि अपने प्लान्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज करें। मेरी तरफ से यही चीजें थी। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू था। रजाक भाई इसके ऊपर ज्यादा बेहतर कमेंट कर पाएंगे क्योंकि वो मल्टीपल लोगों का इन मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं। ओवर टू यू रजाक भाई। थैंक यू सो मच आराम। एंड यस, ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। और आप बिल्कुल एनर्जी में थे, बिल्कुल फॉर्म में थे। जैसे जैसे जो आपका प्रोफेशन है उसके हिसाब से आप बिल्कुल फॉर्म में थे। बस कुछ कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं। जैसे आपको आपको इंट्रोडक्शन को कहा तो आप थोड़ा उसको एलाबोरेट करके आप उसको थोड़ा ब्रीफ करें। जैसे आपने कहा कि मैं एडवोकेट था, उसके बाद मैंने लाइसेंस लिया, आप डायरेक्टली कहते हैं आई एम ए लाइसेंस एडवोकेट। तो कुछ वर्ड्स वो मिनिमाइज करते हैं, जो जो ज़रूरी है वो उसमें ऐड करें। तो अगर क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन वैसे यूजुअली नहीं पूछते, अगर पूछेंगे तो उसको आप एज मिनिमम एज पॉसिबल करें। दूसरी ये ऑब्जर्वेशन थी कि वही कि मुझे कहीं ना कहीं आई वाज फीलिंग कि आप वी यूज कर रहे हैं, या मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि आपका अपना आपका मतलब कंबाइंड जो है ना इफेक्ट था। तो आई वुड से कि आप आई यूज करें। और अनदर ये है कि आप अपने केस को थोड़ा इलाबोरेट करें। लाइक कुछ चीजें ऐसी थी जो ऑलरेडी ऐसे में मेंशन थी, तो आप उसको रिपीट भले करें, पर क्योंकि वो ऐसे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने उसको इलाबोरेट करना है कि आप ये चीज आपने कैसे की, आपको चैलेंजेस कैसे आए, और क्या क्या बैरियर आ सकते थे, अगर आए तो आपने उसको कैसे मतलब कि उसको काउंटर किया। और मतलब आपके पास फ्रीडम होता है इंटरव्यू में कि आप 300 वर्ड्स का तो आपके पास होता नहीं है। तो आप वो बोल सकते हैं, रादर देन रिपीटिंग द थिंग्स विच आर ऑलरेडी मेंशन इन ऐसे, उस चीज को आप ख्याल रखें। और रश न करें। आप आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप फौरन रश करते हैं, तो आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा
चीज, जो क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करने दें कि क्या क्वेश्चन था, आपने सही तरह उस क्वेश्चन को समझा है, फिर डायरेक्टली आप उसको रश करें और फोकस करें कीवर्ड्स पे। रादर देन, आपका प्रोफेशन है तो आप ज्यादा बोलते हैं, तो फोकस करें आपके कीवर्ड्स के, जो उस कीवर्ड से आपके फॉलो अप क्वेश्चन निकलते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स जिस पे आपको मतलब कि ये कमांड हो, तो वो कीवर्ड्स यूज करें ताकि फॉलो अप क्वेश्चन आपके फेवर में हो, जिस जिस पे आपको कमांड है। दूसरा ये है कि एक एक वर्ड आपने यूज किया, ट्राइंग, सोशल मीडिया पे था कोई, आपने कहा ट्राइंग टू हाइड द प्राइवेसी। तो इस चीज को जो गोरे लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। आप ट्राइंग की तो बात ही नहीं है, प्राइवेसी जब आती है तो फुल प्राइवेसी होती है। तो उसमें आप ये कहें कि उसमें आपने फुल फुल केयर की उसकी, जो भी है ऑडियंस है या जो भी केसेस हैं, तो उसमें ये वर्ड यूज ना करेंगे, ट्राइंग टू हाइड द प्राइवेसी। आर यू विथ अस, उमर खान? जी जी, आई एम लिस्टिंग टू यू जी। या, फुल अच्छा। अच्छा, मेरा मूड। क्वेश्चन एक और था कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम पॉलिसी गोल्स को कैसे आपको के लिए फायदेमंद रहेगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपने ज्यादा उसको ड्रैग किया, बैकग्राउंड में लेकर गए। आप डायरेक्ट उसको कोई एक मॉड्यूल पकड़ें, उसको लिंक करें पॉलिसी गोल से, जो आपके पॉलिसी गोल्स थे। ठीक है जी। क्योंकि ठीक है। मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था कि आपने यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में कौन है, क्या काम करता है, किस नंबर पे। मैंने जस्ट आपसे पूछा कि इसका जो ये जो आप एल एल एम कर रहे हैं वो आपके पॉलिसी गोल से, कंट्री के पॉलिसी गोल से कैसे मैच करता है, तो आप डायरेक्टली उस पर जंप कर जाएं। तो ठीक है जी। वो लास्ट तक आपने कुछ हिंट मुझे दिया, मगर जो मैं चाह रहा था वो मुझे मॉड्यूल का, आपने मॉड्यूल से होकर मुझे नहीं नहीं बताया। अच्छा, रेस्पॉन्स टाइम आपका किन किन क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था। तो ओवरऑल मुझे तो ये था कि मुझे उन्होंने डायरेक्ट बता दिया आपके पास 20 मिनट्स हैं, हम 5 5 मिनट्स ईच सेक्शन का आपसे लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने देखा तो कुछ रेस्पॉन्स आपके 4 मिनट्स या 4 मिनट से ज्यादा जा रहे हैं। तो आप टाइम दें ताकि फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाएं आपसे, ताकि इंटरव्यू को पता पड़े कि आपको उस चीज पे जो है आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं। अच्छा। अच्छा, फंडिंग का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपकी क्या फंडिंग होगी, तो आपने जो कुछ ऑप्शंस मुझे बताए, मगर वो मुझे सस्टेन ऑप्शन नहीं लग रहे थे। जैसे किसी बार का आपने बताया, किसी चीज का बताया, तो आप ऐसे फंडिंग मैकेनिज्म बताएं जैसे आपके सेंटर के लिए, जो जो लेजिट हो और सस्टेन्ड हो। तो ये ओवरऑल मेरी ऑब्जर्वेशन थी। बाकी ओवरऑल आपका बहुत जबरदस्त था, बहुत आप एनर्जी में थे, कॉन्फिडेंट थे, और आपकी आंखों में चमक थी, और फेशियल एक्सप्रेशन आपके वर्ड से मैच कर रहे थे, दैट्स व्हाट दे वांट। और आप बिल्कुल इंथुसियास्ट थे, एनर्जेटिक थे, आई मस्ट से। आपको कोई क्वेश्चन हो? या सो आई एम कमिंग बैक टू माय क्वेश्चंस। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी जो मेरी सेकंड चॉइस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट बिकॉज ऑफ माई जीपीए। बिकॉज माई जीपीए इज 3.41 एंड उसकी एलिजिबिलिटी 3.7 है। सो शुड आई मेंशन दिस इन द इंटरव्यू पार्ट लास्ट, अगर मैं कोई उनको मेंशन करना चाहता हूँ कि नहीं? ये तो ये सवाल हो गया। अगर आप ये मैं में से रेस्पॉन्स कोई नहीं इसके करूंगा, मैंने आपको रेस्पॉन्स पर्सनली किया है। मैं हाँ, राम को और करूंगा। हम, हाँ ठीक है, और हम अगर कोई इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहता है। टू बी ऑनेस्ट आई एम नो एक्सपर्ट इसके ऊपर, लेकिन ये है कि पता नहीं मुझे, रजाक भाई मुझे भी इसका आंसर बताएं आप। मतलब ये है कि आप अ, ये कहें कि आप अप्लाई कर, आप कर, या तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें उनसे। और ये इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप ऑनेस्ट रहें, कि आप बताएं आपने अप्लाई किया है, यू यू डिडंट गॉट दी लाइक ऑफर। आप डायरेक्टली कह दें, ऑफर का रीजन आपसे नहीं पूछेंगे। आपने कहा कि आपने अप्लाई किया है, आपने ऑफर नहीं, आपको ऑफर नहीं मिली है, इसलिए आप स्विच कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने कब अप्लाई किया, क्यों नहीं मिला। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं, होता ही नहीं। आप इसमें रजाक भाई उनको ये सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी, क्योंकि अब तो उनको पता है कि ब्रिस्टल में नहीं हो सकता, तो वो अपनी ऑप्शन को चेंज कर लें इंटरव्यू के अंदर। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि आपके पास वो उसी टाइम तो आपको आपको बताएंगे, आपने थ्री हाँ ऑप्शंस जो बताए हैं,
उसमें आप हम्म उस पे ही रहना चाहेंगे या कोई और ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हैं? तो जैसे मैंने हम्म आपको पहले ही बताया कि आप कोर्स को चेंज ना करें, यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकते हैं। हम्म। कोर्स ठीक आप है। चेंज करेंगे तो आपसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि आप कोर्स क्यों चेंज करें, आपका पूरा कैरियर प्लान इस पे बेस्ड है। तो अच्छा, उमर भाई, आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी है यूनिवर्सिटी, वो कौन सी है? क्वींसबेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। क्वींस मैरी है। और रजाक भाई, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्वींस मैरी की रैंकिंग जो है वो बाकी दो से बेहतर है या बराबर ही है? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट। आपको आइडिया है उमर भाई? अच्छा, मैंने जितना पढ़ा है तो क्वींसबेरी यूनिवर्सिटी उन रैंकिंग में बेहतर है फ्रॉम हाँ। तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। इवन इनकी आइलेट्स रिक्वायरमेंट भी बर्मिंघम से ज़्यादा है। मेरे से जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैं एंटर हुआ था, वो मेरी यूनिवर्सिटी चॉइसेस देख के पैनलिस्ट ने पहला क्वेश्चन ही यही किया था कि मुझे एक पैनलिस्ट ने कहा कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी चॉइसेस थी उसमें फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल थी, सेकंड चॉइस पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर थी, और थर्ड चॉइस पे इंपीरियल कॉलेज लंदन था। तो जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से किया वो ये था कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं ये देख रहा हूँ कि किसी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन को थर्ड प्रायोरिटी पे रखा है और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, तो आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा सेम मेरे जैसा ही थोड़ा सा सिनेरियो है। तो कुछ ना कुछ आप इसके आंसर्स रखिएगा। मैंने किस तरह से रिप्लाई किया था, मैंने तीनों के मॉड्यूल्स को उनके सामने ओपन अप करके रखा, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है वो ज्यादा फोकस करती है ऑन ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जबकि इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है उसका मेन फोकस स्टैट्स के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर और एपिडेमियोलॉजी के ऊपर है। तो मैं उस साइड पे नहीं जाना चाह रहा था। तो उन्होंने मेरे इस आंसर को पिक किया और उन्होंने कहा कि अच्छा रिप्लाई है। तो जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि मेरा जाते ही ओपनिंग क्वेश्चन ही यही था। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह उमर विल खान, आपके पास वर्क ऑन 3 मिनट है। दैट। अच्छा। अच्छा, बस मेरा लास्ट सवाल ये है कि कुछ डेवलपमेंट इस तरह है कि मेरे इंट्रोडक्शन में वो पहले से नहीं थे, लेकिन वो डेवलपमेंट्स आफ्टर द सबमिशन ऑफ द इंटरव्यू हुई हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा था। अब हमने एक लॉ फॉर्म इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ पहले मैं क्राफ्ट को पाउंडर के साथ साथ एज ए प्रेसिडेंट देख रहा था। अब मैं उसको एज ए पैटर्न इन चीफ देख रहा हूँ, और अब यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने उसको ओपन किया, और मैं अभी इसको एज ए स्ट्रेटेजिक गाइडर के तौर पे देख रहा हूँ। तो क्या ये इसको मैं मेंशन करूँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए आफ्टर द सबमिशन ऑफ माय एप्लीकेशन? आई वुड से कि अगर आपसे पूछते हैं तो आप जरूर बताएं, या कोई ऐसी चीज जो इससे निकलती है तो जरूरी समझते हैं कि उसको मेंशन करना जरूरी, तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बात है कि आपकी ये डेवलपमेंट आई है। मगर ऑल द वे आपने एक ऐसी चीज स्टेटमेंट ऐड करना जो उन्होंने पूछा ही नहीं है आपसे, तो आई वुड से कि आप ना बताएं, क्योंकि आपने बहुत तो सारी फिर चीजें नहीं जो करना चाहिए। आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे होते हैं, मगर आप वही हैं जो आपकी एप्लीकेशन में है उनकी ठीक नजर है में। जी। ठीक है जी। इसमें ठीक है रजाक जी। भाई, मैं एक ठीक है, छोटी सी थैंक बात जी ऐड करना जी चाहूंगा, जी क्योंकि जी। मेरी भी एप्लीकेशन के अंदर ये था, मैं बहुत सारे और काम कर रहा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, लेकिन जो मैंने अपनी चीजें एप्लीकेशन में लिखी हैं मैं शॉर्टलिस्ट उन चीजों की बेस के ऊपर हुआ हूँ। वो वैसे भी इधर उधर का नहीं पूछेंगे इतना, क्योंकि एग्जैक्टली वो सॉर्ट ऑफ वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन में लिखा है क्या आप वही हैं, वही और है। वो उसी को ही ज्यादा स्क्रैच करेंगे। मैं जो मेरा ओपनिंग लीडरशिप का क्वेश्चन था उसके अंदर मैं उनको एग्जांपल्स देने लग गया था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की और कुछ और जो हम हेल्थ के वो पीस एंड टॉलरेंस कैंप्स करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर क्या काम कर रहे हैं जो आपने अपने एसे के अंदर लिखा हुआ है। तो वो जाते नहीं है, अगर आप इधर उधर निकलने लगे तो वो आपको पकड़ के वापस ले आते हैं उधर। तो ऐसा मौका आएगा नहीं वैसे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टू हैव अ वेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरव्यू, और बहुत अच्छा लगा जो सवालात फीडबैक आए हैं ना, दैट वाज एन आई ओपनिंग फॉर मी। और होपफुली कि मैं इंशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूंगा एंड टू गेट दिस स्कॉलरशिप इन द वेरी फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। डॉक्टर राम। बेस्ट विशेस। थैंक यू आप सो मच टाइम रजाक भाई दिया, फॉर द थैंक यू सो अपॉर्चुनिटी। मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू उमर खान। बाय। थैंक यू जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।